Today we'll be studying the topic of purchases book. I hope you all must be remembering that subsidiary books we started. In that subsidiary book, we started with the cash book. We already studied that single column cash book, double column cash book, and all. And today our topic of study will be the purchase book. Before starting that, this is the commerce team of Jink Vidyalaya, and this is a short introduction about me, who is taking accountants and business studies of yours. And these are the social media handles where you can join us, you can follow us, you can contact to us. Fine. So let's start with a short introduction about the purchases book and all. Before that, I would like to take your test also. Krishna will answer me, what are the various types? You just have to name them. What are the various types of subsidiary books? And the next question to that is from Ananya. The question is, in the cash book, what kind of transactions are recorded? And the next question to that will be from Rishi. In the purchases book, what kind of transactions we have to record? And the next question will be from Harshil. In the sales book, what kind of transactions will be recorded? Fine. So let's start. Yes, Krishna, start your answer. Hurry up fast. We are having already shortage of time. Okay, question passes to Rishi. इतना wait नहीं होगा. Instantly you have to answer. Rishi, just enable your mic and answer it fast. अरे 8 लिखते रहे जब तक हो गया काम. Okay, for purchases book you have answered. Fine. Yes, Rituraj, the first question is to you. Sir, purchase book, cash book, sales return book, purchase return book, journal proper. You have left 2. Just check now. These are the 8 kinds of subsidiary books that can be prepared. Rishi has answered credit purchases. Fine, that is correct. And the next question is for sales book, to whom I have given the chance. Just answer the question. What kind of transactions are recorded in the sales book? अरे बहुत स्लो आप लोग. इतना स्लो चलोगे जब तक फिर पूरा पीरियड बस यही पूछता रह जाऊंगा. लीव इट. इतना ऐसा स्लो नहीं, आप लोगों को थोड़ा सा रेडी रहना पड़ेगा. So in the cash book, students, we record all and only cash transactions. Cash and bank transactions can be recorded. And in the purchases book, we do record the credit purchases of goods. Fine. In the sales book, we record the goods sold on credit. गलत लिखा हुआ है, इसको correction करना पड़ेगा. In the sales book, what do we record? The goods sold on credit. So goods sold on credit are recorded or is recorded under sales book. Fine. So these things we already studied in our previous classes. उम्मीद करता हूँ आप लोगों को याद होगा, जिनको याद नहीं उनको रिकॉल हो गया होगा. And now the purchase return book. In the purchase return book, we record the credit, the return of goods which were purchased on credit. In the sales return book, we record the return of goods which were purchased on, which were sold on credit. The bills receivable book and bills payable book we will not study. It is not included in our class 11 syllabus. But the thing is, if I will give you the question, what are the various types of subsidiary books? There you have to answer that there is a bills receivable book and bills payable book also. If you won't answer that, then the answer will be considered to be incorrect or the incomplete, and marks will not be allotted the complete one. Fine. And the last one is the journal proper. In the journal proper, we do record the
transactions which cannot be recorded in either of the above 7 subsidiary books. Fine. Moving to the format of purchases book, we are having the format of purchase book on your screen. You can just check it. First of all, we do have the column for the date in which we will mention the date of the transaction. Then the particulars, we will mention the name of the person from whom we have purchased the goods. I repeat, in the particulars, we will mention the name of the person or the business or the institution or the firm from we have purchased the goods. In the invoice number column, we have to mention the bill number. जब हम goods purchase करते हैं, we get an invoice. So in the invoice number column, we have to mention the invoice number. In the details, suppose from one person you have purchased 2, 3, 4 kinds of goods. So you will just total up all the goods. आपने 4 item purchase किए तो उन सबका total यहाँ पे details show करेंगे. And then the total will be shown in the cost column. उनका सबका details तो यहाँ पर जाएगा. First item का price, second item का price, third item का price, fourth item का price, and finally उनका जो total है that will be in the cost column. Then on those goods, if the GST has to be charged, is CGST. Again, one misprint is there. It should be CGST. It is not CST, it is CGST. Please note it down correctly. It is CGST. Okay. So input CGST, input SGST, fine. Then input IGST, and finally the total. That is cost plus GST will give you the total. Now, and on the top, obviously, we have to mention the purchases book. Now, the short explanation regarding what do we mention in the CGST, in the SGST, in the IGST and all. तो बहुत short explanation इसका आपको मैं देता हूँ. पहली बात तो ये, जब purchases होगा तो ये input होगा, और जब sales होगा तो ये input GST क्या हो जाएगा, ये output GST कहलाएगा. जब तक ये परचेजेस है तब तक इसको हम इनपुट जीएसटी बोलेंगे. जब ये सेल्स बुक हम बनाएंगे तो यही जीएसटी क्या बन जाएगा, ये आउटपुट जीएसटी हो जाएगा. तो एक चीज तो ये याद रखिए. अब बात आती है कि सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी, इनमें क्या डिफरेंसेस है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, देयर आर एक्चुअली टू काइंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस. देयर आर टू काइंड्स ऑफ ट्रांजैक्शन. वन इज नोन एज इंट्रा फर्म इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस. What do you mean by intrastate transactions? Intrastate transactions means, suppose we are living in Rajasthan, and when the goods are sold and purchased from Ajmer to Jaipur, from Bhilwara to Udaipur, these will be called as the intrastate transactions, and under such transactions we do charge CGST and SGST at the half rate each. Suppose the rate of GST is 5%, then 2.5% will be for CGST and 2.5% will be for SGST. On the intra-state transactions, within the state transactions, CGST and SGST will be charged at the half rate, and that is all. For the next, that is interstate transactions. What does interstate transactions mean? Interstate transactions means the transactions between two states. That is, when the goods are sold from Rajasthan to Delhi or from Rajasthan to Gujarat, that will be called as to be a interstate transactions. And on the interstate transactions, we do charge IGST. We do charge IGST at the full rate, not at the half rate, but at the full rate. So this is just the difference you have to keep in mind. If there will be an intrastate transaction, CGST and SGST, and if there will be a interstate transactions, then the IGST. And the rate of GST will be mentioned in the question. उसमें आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं. So any questions, anybody to regarding this format or general introduction? The first important thing that you have to keep in your mind is purchases book we are studying today, and purchases book records the credit purchases of goods. If we purchase machinery on credit, it will not be recorded in the purchases book. If we have purchased building on credit, it will not be recorded in the purchases book.
But if we have purchased the goods on credit, it will be recorded in the purchases book. Fine. Let us move further. We do have the question that is record the following transactions in the purchases book of सुभाष जनरल स्टोर दिल्ली। ये जो बिजनेस है ये कहाँ पे है? ये दिल्ली में है। यानी अगर हमने दिल्ली में ही सेल परचेज किया तो क्या लगेगा? CGST एंड SGST लगेगा, बिकॉज वो विद इन द स्टेट हो जाएगा, विद इन द यूनिट टेरिटरी मान लीजिए। और जब हम इसको दिल्ली से बाहर अगर सेल करेंगे तो फिर वो उस पर क्या लगेगा? IGST लगेगा। विद इन द दिल्ली पे CGST एंड SGST एट द हाफ रेट, आउटसाइड द दिल्ली IGST at the full rate. Fine. So ये याद रखिए। First transaction is on May 1st. Bought from Messrs चुन्नी लाल मामराज दिल्ली। यानी आपने परचेज किया और कहाँ से परचेज किया? दिल्ली से ही परचेज किया है। 100 bags of ITC wheat, 50 bags of rice basmati, less trade discount, उसमें से trade discount less करेंगे, and CGST and SGST चार्ज करना है at the rate of 6% each लिखा है। was payable on the purchases, 6% each हमें CGST SGST लगाना है। Second is bought from Messrs Kanodia Oil Mills Delhi, again दिल्ली की बात कर रहे हैं यानी विद इन द स्टेट ही है, so CGST SGST लगेगा। और क्या क्या परचेज किया? 40 tins of oil and 20 tins of basmati, tins of basmati oil, sorry, banaspati oil, sorry, and then trade discount is at the rate of 5%, and CGST and SGST again at the rate of 6% each. The third transaction is on 4th May, and it is given as purchased from Messrs Gupta Brothers Hapur. इसका मतलब आपने ये आउटसाइड द स्टेट से परचेज किया, और जब आउटसाइड द स्टेट से परचेज करेंगे तो कौन सा GST लगेगा? IGST लगेगा। किस रेट से लगेगा? फुल रेट से लगेगा, यानी कि 12% की रेट से लगेगा IGST। ठीक है। किसी भी स्टेज पे कोई कंफ्यूजन लगे, कोई डाउट लगे तो चैट बॉक्स ओपन है, आप इमीडिएटली उसमें मेंशन कर सकते हैं। लेट अस मूव फर्दर। दैट इज क्या क्या परचेज किया इनसे? 20 bags of grams, 40 bags of oats, 5% का ट्रेड डिस्काउंट एंड 12% इज द IGST. So this is the question. Now we will start entering these transactions in the purchases book. Format मैंने आप लोगों को पहले ही बता ही दिया था. So let us start with it. Let me clear this drawing. Here is the solution. पूरा नहीं आ रहा है स्क्रीन पे, अभी थोड़ा ठीक है। नाउ डेट, फॉर्मेट देख सकते हैं आप। डेट, particulars, one column is there for the ledger folio or the invoice number, you can make a column, then details, then the cost, input CGST, input SGST, input IGST and the amount. अमाउंट लिख सकते हैं, इसको टोटल भी लिख सकते हैं, जैसा भी आप appropriate समझें। टोटल कैन आल्सो बी मेंशन्ड हियर। फाइन। आफ्टर दैट on the top we have mentioned Subhash General Store or purchases book. After that on May 1st we have purchased it from Messrs मामराज चुन्नीलाल मामराज, तो हमने नेम मेंशन किया। और एक चीज मैं बता दूं, इसमें नहीं किया हुआ बट आप ध्यान रखें, जब कभी भी आप नेम ऑफ द सप्लायर मेंशन करेंगे उसे आप अंडरलाइन करेंगे। आपकी कॉपी में याद रखें, जो नेम ऑफ द सप्लायर है पर्टिकुलर्स के कॉलम में उसको आप अंडरलाइन करेंगे, और उसके बाद में आपने उनसे क्या क्या परचेज किया वो आप मेंशन करते जाइए। तो हमने देखिए उनसे परचेज किया है 100 bags ऑफ व्हीट एट द रेट ऑफ 530, तो टोटल अमाउंट हमने लिखा उसका डिटेल्स के कॉलम में 53,000। देन 50 bags ऑफ राइस एट द रेट ऑफ 500, इन द डिटेल्स कॉलम वी हैव मेंशन 25,000, इसका टोटल किया 78,000। लेस ट्रेड डिस्काउंट किया, ट्रेड डिस्काउंट 10% की रेट से हमें बता रखा था क्वेश्चन में, तो 7,800 का ट्रेड डिस्काउंट लेस किया, आया 70,200।
इसके ऊपर हमने चार्ज किया CGST एट द रेट CGST एंड SGST एट द रेट ऑफ 6% ईच। 70,200 के ऊपर CGST एंड SGST चार्ज किया, 4,212 एंड 4,212 एंड फाइनल टोटल अमाउंट ऑफ 78,624 हैव बीन वी हैव गॉट। अब इसका डिटेल शो करेंगे। कॉस्ट कितनी है? दिस 70,200 इज द कॉस्ट, जो कि ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाला अमाउंट है। फिर से बता रहा हूँ, जो ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाला अमाउंट है उसे आप लेंगे कॉस्ट में, ये याद रखिएगा अच्छी तरह से। जो आपने यहाँ पे 70,200 ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद जो आपके पास अमाउंट आया था ना, उसे हम मानते हैं कॉस्ट। देन CGST जितना चार्ज किया, SGST जितना चार्ज किया, IGST तो लगेगा नहीं इस पर कोई, क्यों? क्योंकि विद इन द स्टेट था। और टोटल में अमाउंट जो हमारा टोटल था 78,625 वो आ गया। अगर किसी के माइंड में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में लिखिए जल्दी से। जब एक ट्रांजेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आप लाइन खींचेंगे पर्टिकुलर्स के कॉलम में। कर देते हैं। आपको लाइन जो खींचनी है, दैट लाइन शुड एक्सटेंड ओनली टू द कॉलम ऑफ पर्टिकुलर्स एंड इन द कॉलम ऑफ डिटेल्स। पर्टिकुलर्स और डिटेल्स के कॉलम में आप लाइन खींचेंगे, बाकी दूसरे अमाउंट्स के कॉलम में आपको लाइन नहीं खींचनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द सेकेंड ट्रांजेक्शन इज ऑन May 3। ऑन May 3 अगेन वी हैव मेंशन कि किससे परचेज किया है, उसका नेम मेंशन कर दिया, मेसर्स कनोडिया ऑयल मिल्स दिल्ली, और उसको अंडरलाइन कर दीजिए। आफ्टर दैट जो आपने उनसे परचेज किया वो मेंशन करो, और उसका जो अमाउंट आ रहा है वो डिटेल्स के कॉलम में लिखते जाओ। टोटल हो गया 78,000। उस पर ट्रेड डिस्काउंट चार्ज किया हमने 5% के रेट से, लेस कर दिया ट्रेड डिस्काउंट। लेस करने के बाद में हमारे पास में अमाउंट बचा 74,100। इस पे CGST एंड SGST कैलकुलेट किया एट द रेट ऑफ 6% एज पर द इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन। फिर से मैं बता दूं, कॉस्ट के कॉलम में कौन सा अमाउंट आएगा? जो ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद जो अमाउंट था वो आप कॉस्ट में लिखेंगे, CGST का अमाउंट CGST में, SGST का अमाउंट SGST में, एंड IGST में आपको कुछ नहीं लिखना है। फाइनली द अमाउंट विल बी इन द टोटल कॉलम। अब यहाँ पे इन्होंने ब्रेक कर दिया, आई डोंट नो व्हाई, बट ऐसा आपको ब्रेक नहीं करना है, ये कंटिन्यूसली चलेगा। हाँ, लाइन जरूर हमें खींचनी है। एक तो पर्टिकुलर्स के कॉलम में हम लाइन खींचेंगे, और कौन से कॉलम में लाइन खींचेंगे? डिटेल्स के कॉलम में लाइन खींचेंगे, बाकी किसी डेट के या अमाउंट के कॉलम में लाइन नहीं खींचनी है। यू विल ड्रॉ अ लाइन आफ्टर ईच ट्रांजेक्शन इन द कॉलम ऑफ पर्टिकुलर्स एंड डिटेल्स। लेट अस मूव फर्दर। नेक्स्ट इज, फिर से देखिए मिसप्रिंट है, जो हमारा थर्ड ट्रांजेक्शन था ना वो May 4 पे है, तो ये May 4 लिखना आप इसको, May 3 नहीं है, May 4 पे रिकॉर्ड होगा थर्ड ट्रांजेक्शन। और May 4 पे हमने परचेज किया है किससे? मैसर्स गुप्ता ब्रदर्स हापुर। इसको अंडरलाइन करेंगे, जो जो उनसे परचेज किया वो मेंशन करेंगे। क्या परचेज किया आपने इनसे? यू हैव परचेज्ड 25 bags of gram at the rate of 480, 40 bags of oats at the rate of 25, टोटल हो गया 13,000। लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 5%। फाइनली हमारे पास अमाउंट आया 12,350। इस पर IGST चार्ज करेंगे एट द रेट ऑफ 12% का टोटल अमाउंट। और ये हमारे पास में, फिर से बता दूं, कॉस्ट के कॉलम में कौन सा अमाउंट लिखेंगे? जो ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाला अमाउंट है वो आएगा कॉस्ट में। CGST SGST में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ये हापुर यानी कि आउटसाइड द स्टेट था। देन IGST में हमने अमाउंट लिखा GST का, और ये टोटल में आ गया। बस उसके बाद में आप टोटल कर दीजिए। ये दिख रहा है आपको टोटल? ये हमने सभी कॉलम्स का टोटल कर दिया, कॉस्ट के कॉलम का भी टोटल। डिटेल्स के अमाउंट के कॉलम का टोटल नहीं होगा। डिटेल्स का कॉलम टोटल क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने सब में इसीलिए लाइन मैंने ड्रॉ करवा दी थी आपसे। अच्छा, जो टोटल करेंगे कौन सी डेट पे करेंगे? जो उस महीने की लास्ट डेट है, दैट इज May 31 पे हम इसको टोटल को करेंगे। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज, जब आप टोटल करोगे ना, चलो ठीक है, दैट इज सफिशिएंट। तो ये टोटल कर दिया हमने, कॉस्ट के कॉलम का टोटल कर दिया 1,56,650। देन हमने इनपुट CGST का टोटल कर दिया, इनपुट SGST का टोटल कर दिया, इनपुट IGST का टोटल कर दिया, और अमाउंट के कॉलम का भी टोटल कर दिया। यहाँ तक किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो बोलिए, अदरवाइज फिर आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, आपके पास में ये जो परचेजेस बुक है, इस परचेजेस बुक में तीन अमाउंट तो आपको नजर आ रहे हैं। कहाँ पे? ऑन द वर्टिकल कॉलम 78,625,
82,992 एंड 13,832। जो अमाउंट्स आपके वर्टिकल कॉलम में आपको दिख रहे हैं, इन्हें आप क्रेडिट करेंगे। जर्नल एंट्री करना बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान से देख लीजिए। इन तीनों अमाउंट्स को आप क्या करेंगे, जर्नल एंट्री में क्रेडिट करेंगे। थोड़ा सा 1-2 मिनट एक्सटेंड हो रहे हैं क्लास में, आप लोग बने रहिए, बिकॉज इस क्वेश्चन को बीच में हम नहीं छोड़ सकते। ये क्लियर हो गया आपको? ये जो वर्टिकल, लास्ट के वर्टिकल कॉलम में जो 3 अमाउंट्स थे, इन तीनों को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और किस नाम से करेंगे? जो बिजनेसमैन था जिससे हमने परचेज किए थे, जो सप्लायर था, उसके नाम से इनको क्रेडिट किया जाएगा। यानी कि चुन्नीलाल मामराज के सामने 78,625, कनोडिया ऑयल मिल्स के सामने 82,992 एंड गुप्ता ब्रदर्स के सामने 13,832। इनको तो क्रेडिट करना है। और डेबिट किसको करना है? हम डेबिट करेंगे जो अमाउंट्स हॉरिजॉन्टल कॉलम्स में दे रखे हैं। तो देखिए, एक तो दे रखा है ये अमाउंट 1,56,650, उसके बाद में इनपुट CGST और इनपुट SGST एंड इनपुट IGST। ये जो अमाउंट्स आपने हॉरिजॉन्टल रो में लिखे ना, इनको आप डेबिट करेंगे जर्नल एंट्री में, इनको आप डेबिट करेंगे। और द लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो कॉस्ट के कॉलम को आप डेबिट करोगे, किस नाम से डेबिट करोगे? कॉस्ट को आप डेबिट करोगे परचेजेस के नाम से। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि आपने कितने रुपीज की गुड्स परचेज की, तो यहाँ पे उन गुड्स के परचेज का कॉस्ट है 1,56,650 और बाकी का उस पर GST लगा है। ये समझ में आ गया? जो लास्ट में रो में हमने टोटल्स किए हैं हॉरिजॉन्टली, वो डेबिट होंगे अमाउंट्स, और जो लास्ट में वर्टिकल कॉलम्स में 3 अमाउंट्स हैं, वो होंगे क्रेडिट। अब इसी को मैं आपको जर्नल एंट्री में स्पेसिफाई कर देता हूँ। Here we do have the journal entry, that is, सबसे पहले हमने परचेज अकाउंट को डेबिट किया। परचेज अकाउंट डेबिटेड 1,56,650। जो लास्ट का हमने टोटल किया था हॉरिजॉन्टल रो, उसमें जो अमाउंट्स है वो सारे लिखे हुए हैं। इनपुट GST, इनपुट CGST अकाउंट डेबिटेड, इनपुट SGST अकाउंट डेबिटेड एंड इनपुट IGST अकाउंट डेबिटेड। ये सब हमने अमाउंट्स यहाँ पे डेबिट के कॉलम में लिखे। ये डेबिट का कॉलम। और क्रेडिट के कॉलम में क्या लिखेंगे? क्रेडिट के कॉलम में मैंने बताया था, तीनों जो सप्लायर्स थे उनके नाम आएंगे, और तीनों सप्लायर के सामने अमाउंट कौन से आएंगे? जो वर्टिकल कॉलम में 3 अमाउंट्स हमने लिखे हुए थे ना, वो क्रेडिट के कॉलम में इन तीनों सप्लायर्स के सामने आएंगे। जो क्रेडिट के ट्रांजेक्शन आप लिख रहे हैं, उसके आगे आप ये वर्ड टू का यूज करेंगे। ठीक है? और कोई कंफ्यूजन और कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। I think everyone is clear. So the last thing is, wait, let me take the screenshot for this. First of all, this question you have to do in your copy as a classwork, and this one is the homework. So this question you will do in your homework. In this question also, you have to prepare the purchase book that you have to do as a homework. So that was all for this period. If anybody is having any queries, any doubt, may ask, or we can just make the class over.